everyone, welcome to the lecture number 3 of our chapter Chemical Reaction and Equation. Today's aim: oxidation reaction, redox reaction, corrosion and rancidity. The chapter will be covered by this lecture. Oxidation. A reaction in which oxygen is added और hydrogen is removed is called oxidation. रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, उसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन. एग्जाम्पल 2CO plus 2CO. Copper combined with oxygen to form black copper oxide. Here copper is oxidized. Reduction. A reaction in which oxygen is removed or hydrogen is added is called a reduction. Examples include CuO plus H2 gives Cu plus H2. It is an entire chapter in class 11. So understand this carefully and also for 10th board. Copper oxide loses oxygen and forms copper. Therefore, copper oxide is reduced. Redox reaction. The redox reaction is in 11th, not the reduction. But it is useful in 11th for solving the problem of redox reaction. So be careful about that. A reaction in which oxidation and reduction occurs simultaneously. दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होते हैं, उससे कहते हैं हम रिडक्स रिएक्शन. एग्जाम्पल्स इंक्लूड CuO plus H2 gives Cu plus H2. Hydrogen gains oxygen, oxidation. Copper oxide loses oxygen, reduction. Since both happen together, it is a redox reaction. Oxidizing agent. A substance that causes oxidation of another substance is called oxidizing agent. It supplies oxygen and removes hydrogen. Example: CuO plus H2 gives Cu plus H2. Copper oxide provides oxygen to hydrogen, so copper oxide is the oxidizing agent. Reducing agent. A substance that causes reduction of another substance is called a reducing agent. It removes oxygen and supplies hydrogen. Example: CuO plus H2 gives Cu plus H2. Hydrogen removes oxygen from CuO, so hydrogen is the reducing agent. Corrosion. The slow destruction of metal due to reaction with air, moisture or chemical is called corrosion. जब एक मेटल कोरोजन होता है तब वो कब होता है? जब वो एयर, मॉइस्चर और केमिकल के कांटेक्ट में होता है. एग्जाम्पल 4Fe plus 3O2 plus XH2 gives 2Fe2O3 dot XH2. X can be anything as per condition के ऊपर डिपेंड करता है. रेडिश ब्राउन रस्ट. कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कोरोजन: ऑक्सीजन एंड वाटर. मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों जरूरत होती है. हार्मफुल इफेक्ट: weakness breaches in buildings, damages vehicles, causes economic loss. Prevention of corrosion: painting, oiling and greasing, galvanization, electroplating, alloying. Example: stainless steel. Galvanization example: coating with iron with zinc, like in the handle of some cycles. Final topic: rancidity. The oxidation of fat and oil causing bad smell and taste is called rancidity. Examples: chips become stale, butter develop foul smell, cooking oil after long exposure to air. Prevention from rancidity: store food in airtight container, refrigerate food, use antioxidant, bake food in nitrogen gas, usually chips packets. Differentiate between corrosion and rancidity. 3 mark question.
Corrosion occurs in metals lost in corrosion product. Damages metal object density occur in fats and oil, reduces bad smell and taste, spoils the food. Okay, the lecture is finished here, but you have some tasks to do. मॉड्यूल फ्रॉम टेलीग्राम, ओवरऑल चैप्टर का एक मॉड्यूल मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना और अटेम्प्ट करना है, और कोई डाउट हो तो DM करना। आज की क्लास को रिवाइज करना है और मंडे को आपका एक टेस्ट होने वाला है, जिसके लिए प्रिपेयर होना। कल हम एक इस चैप्टर का रैपिड रिवीजन सेशन रखेंगे, कल हम इस चैप्टर का रैपिड रिवीजन सेशन रखेंगे 6 बजे, जिसमें हम थोड़े बहुत क्वेश्चन भी करेंगे और फिर मंडे को आपका टेस्ट होगा। फिर नेक्स्ट वीक को कौन सा चैप्टर आए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम में डाउट पूछ सकते हैं, नोट्स DPP मॉड्यूल जो भी है वो सब मिल जाएंगे इस पर। ठीक है, टाटा बाय बाय।